Namaskar दोस्तों, good evening friends. I'm Dr. Sanjay Kalra, your friendly endocrinologist, and you're watching Dr. KK Med Talks. Thursdays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 730वां 730th एपिसोड है. Let's have the headlines for today. Serum Institute will try to launch an Omicron-specific vaccine after 6 months. The World Health Organization has taken cognizance of the flood situation in Pakistan and says that the chances of disease spread are really high. तो वो भी हमें ख्याल रखना है, and our hearts go out to our neighboring country. We wish them all the best. India has approved indigenous HPV vaccine, human papilloma virus vaccine. ये कैंसर के खिलाफ काम करती है. लेडीज में जो कैंसर सर्विक्स होता है उसके खिलाफ काम करती है. इसका नाम है सर्वावैक. This is made by the Serum Institute and it will cost about 200 to 400 rupees. तो बहुत ही अफोर्डेबल वैक्सीन आ जाएगी सीए सर्विक्स के खिलाफ. कनाडा में बीमारी बढ़ गई है, वो है मॉन्की पॉक्स की, एंड दे हैव कंफर्म्ड बिल्कुल शगन वाला नंबर 1251 एग्जैक्ट आंकड़े जो हैं कनाडा के. सो मोर देन 1200 मॉन्की पॉक्स केसेस इन कनाडा. एंड फिजिशियंस का काम मुश्किल होता जा रहा है, फिजिशियंस का, डॉक्टर्स का एंड जनरल पब्लिक का भी, because the simultaneous spread and prevalence of diseases, viral diseases, COVID, swine flu, dengue, scrub typhus, इन सब से जूझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, and it is difficult to differentiate between them. And we remember the KK Med Talk that we had with Dr. Suneet Verma, जब उन्होंने प्लेटलेट्स के बारे में बात की थी और डेंगू के सही इलाज के बारे में बात की थी, तो एक मुश्किल सी चीज आ रही है हमारे सामने. But let's go to a very interesting topic today. आज का टॉपिक देखते हैं क्या है. आज का टॉपिक है प्यूबर्टी एंड हेल्थ. तो प्यूबर्टी के बारे में जानेंगे. शॉर्टली आवर गेस्ट इज गोइंग टू जॉइन अस. इनका नाम है डॉक्टर मोहन टी शेनॉय और ये कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं त्रिवेंद्रम में. जैसे ही आते हैं हम उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं. इन द मीन टाइम लेट्स सी हु ऑल इज जॉइंड. डॉक्टर एन.एस. शारदा सर हैं. थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग्स. एंड सर कहते हैं डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है, एज, जीन्स, यस सर, एवरीथिंग टुगेदर. वी विल टॉक अबाउट दैट. Dr. V.K. Goyal, warm welcome, sir, and thank you for appreciating the topic. And Dr. Sharda sir कहते हैं, yes, everybody knows about good and bad, but जो peer pressures हैं, societal pressures हैं, they take you towards the wrong things. Swapna Jain ji, yes, wishing everyone an awesome new month and festive season भी चल रहा है. Warm greetings to Vinay Gupta ji, Dr. Sanjeev Puri, and Dr. Rameshpal Singh Pawar sir. Vedant Kulkarni ji भी हैं, and A. Patel. Warm welcome everybody. So let's talk about puberty. Now, everybody has to go through puberty. So all of us who are listening, all of us have gone through puberty. And in many cases, our children, our grandchildren are also going through puberty, or maybe they've already undergone that phase. Dr. Jayadev Patil ji bhi hain. Good evening, madam. And the point about puberty is कि ये एक phase है जब development होती है. When you move from being a child to being an adult. हमारे साथ बहुत सारे child specialists हैं. And all the child specialists will agree. अच्छा, उनकी तो बाद में बात करें. ऑल द मम्मीज एंड पापाज, ऑल द पेरेंट्स विल एग्री कि बच्चों को हैंडल करना डिफरेंट होता है. ग्रोइंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स को जो प्यूबर्टी में से निकल रहे हैं, दैट इज द टफेस्ट पार्ट. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन दे बिकम एडल्ट्स, देन यू हैव डिफरेंट चैलेंजेस. तो जो प्यूबर्टी है, दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ व्हिच इज एक्चुअली अ हार्मोनल फेज. इट्स पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी, व्हिच मींस इट्स नॉट अ डिजीज, इट इज नॉर्मल. इट इज आल्सो एन एंडोक्राइन फेज, जिसका मतलब ये हार्मोन्स पे निर्भर है. एंड रत्नेश जैन जी भी हैं हमारे साथ. प्यूबर्टी में होता क्या है कि एक छोटी सी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस. ये बादाम जितनी होती है और ये होती है ब्रेन के बिल्कुल बीच में. ये जो हाइपोथैलेमस है, इसको ट्रिगर मिलता है. इट गेट्स ट्रिगर्ड टू ग्रो. जब ये ग्रो करता है तो ये मैसेजेस भेजने शुरू करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड इससे भी छोटा ग्लैंड है, एक मटर जितना है. इट्स लाइक अ पी. इतना छोटा है, जस्ट 5 to 6 millimeters and maybe 500 to 600 milligrams heavy. 1 ग्राम का भी नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड. यहाँ से हार्मोन्स निकलने शुरू होते हैं.
पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हिस्से हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और जो एंटीरियर ग्लैंड है वो ऐसे हार्मोन्स, आगे वाला ग्लैंड है वो ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो बॉडी के टारगेट ऑर्गन्स पे काम करना शुरू करते हैं। अब ये टारगेट ऑर्गन्स खूब सारे हैं, थायराइड भी है, एड्रिनल ग्लैंड भी है और गोनैड्स भी हैं। प्यूबर्टी में क्या होता है कि दो ग्लैंड्स, एड्रिनल और गोनैड्स, ये जागना शुरू होते हैं। तो फर्स्ट वी स्पोक अबाउट द हाइपोथैलेमस, देन वी टॉक्ड अबाउट द पिट्यूटरी, ये दोनों ब्रेन में है और इनको इकट्ठा ही लिया जाता है एंड समटाइम्स वी से हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, समटाइम्स वी जस्ट से पिट्यूटरी, क्योंकि मेन हार्मोन्स वहां से निकल रहे हैं। टारगेट ऑर्गन्स दो हैं, वन इज एड्रिनल, एडरीनल मतलब किडनी के बगल में, और एड्रिनल ग्लैंड्स भी छोटे छोटे से हैं, किडनी के ऊपर होते हैं एंड रफली 3 ग्राम्स ईच। तो हाइपोथैलेमस इज 4 ग्राम्स, पिट्यूटरी इज अबाउट 500 to 600 मिलीग्राम्स, एड्रिनल्स 3 ग्राम्स ईच, बिल्कुल छोटे छोटे ग्लैंड्स। और साथ में गोनैड्स, लड़कियों में ओवरीज और लड़कों में टेस्टीज। ओवरीज और टेस्टीज का साइज बड़ा होता जाता है जब कोई बच्चा हो, प्री प्यूबर्टल छोटा हो, तो ये ग्लैंड्स बहुत ही छोटे होते हैं, हार्डली दिखाई तो देते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक 2 ग्राम्स 3 ग्राम्स एंड देन इन प्यूबर्टी दे बिगिन ग्रोइंग। जो एवरेज साइज होगा ओवरीज का, दैट विल बी अबाउट, इट्स इन वॉल्यूम्स अराउंड 7 cc एंड वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है ओवरीज का बेस्ड अपॉन द मेंस्ट्रुएशन, बेस्ड अपॉन वेयर वी आर चेकिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंसेस आते हैं लड़की को तो ओवरीज छोटी होती हैं, जैसे जैसे एग बनता है द ओवरीज बिकम बिगर एंड बिगर और फिर वो एग फट जाता है अराउंड द 15th डे। बच्चों की, लड़कों की जो टेस्टीज होती हैं, टू बिगिन विद दे आर वेरी स्मॉल, जस्ट 1 to 2 cc एंड दे कैन ग्रो अप टिल अराउंड 15 to 20 grams or 15 to 20 cc of weight, that's the normal weight. We also welcome Shubhlata Chakwal madam. तो हम बात कर रहे हैं मैम प्यूबर्टी की, and we were just talking about the hormones, the glands. So the glands are the hypothalamus, the pituitary, the adrenals, and the gonads, which is the testes in boys and the ovaries in girls. अब प्यूबर्टी जब शुरू होती है तो हाइपोथैलेमस से ट्रिगर आता है that pushes the pituitary gland to work and pituitary gland हार्मोन निकालता है जो टेस्टिस और ओवरीज को आगे ट्रिगर करते हैं। So from the hypothalamus we have GnRH, gonadotropin releasing hormone. From the pituitary we have LH and FSH, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. ये जो नाम बनाए गए, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, follicle means egg, ये फीमेल फिजियोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्शन के हिसाब से नाम इजाद किए गए थे, बट यही हार्मोन्स बॉयज में भी होते हैं, आदमियों में भी होते हैं और ये सेम काम करते हैं। FSH stimulates the egg formation in women and it stimulates spermatogenesis, sperms को बनाता है in men. ये दोनों ओवरीज और टेस्टिस पे एक्ट करते हैं। ओवरीज से निकलता है ईस्ट्रोजन और टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। और हार्मोन्स भी एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। The main androgen male hormone which comes from the adrenal in both men and women is called DHEA, dehydroepiandrosterone, DHEA। और ये हार्मोन्स इकट्ठे मिलके प्यूबर्टी क्रिएट करते हैं, एक मैजिक क्रिएट करते हैं हमारे सामने। हम बात करते हैं तितलियों की, बटरफ्लाइज की, और हमें पता है कि बटरफ्लाई के 4 फेजेस हैं एंड केदार जोशी जी सर हैज आल्सो जॉइंड, बट लेट्स आस्क एवरीबॉडी व्हाट आर द 4 फेजेस ऑफ लाइफ ऑफ अ बटरफ्लाई। वो 4 फेजेस होते हैं और हमें लगता है कि जादू हो रहा है, कुदरत जादू कर रही है, नेचर is showing magic, God is showing magic, evolution is showing magic। एक प्यूपा से सडनली तितली निकलती है, बट सिमिलर मैजिक बच्चों में भी होता है। छोटा सा बच्चा सडनली आप देखोगे 1-2 साल में वो बड़ा हो जाता है या वो बड़ी हो जाती है एंड यू सी दैट ग्रोथ occurs। So that's what puberty is। Puberty will occur in everybody। Now when is it abnormal? यदि लड़कियों में 8 साल से पहले प्यूबर्टी आ जाए या पीरियड्स आने शुरू हो जाएं, तब हम उसे एबनॉर्मल मानते हैं। हमारी किताबें ये कहती हैं, अब तो कुछ किताबें कहती हैं कि 6 साल से कम इसको एबनॉर्मल मानो, जिसका मतलब 7 या 8 साल पे अगर प्यूबर्टी हो जाए गर्ल की तो दैट इज नॉर्मल। बट इंडिया में हमारा जो सोशल मिल्यू है, हमारा सोशल सर्कल है, वी डोंट एक्सेप्ट दैट
and therefore 8 years is what we take for precocious puberty. लड़कों के लिए कुछ लोग 10 साल लेते हैं, जिसका मतलब अगर 10 साल से पहले लड़का बड़ा हो जाए, प्यूबर्टी आ जाए, तो ये एबनॉर्मल है। ये हो गया प्रिकॉशियस या अर्ली प्यूबर्टी, 8 साल लड़कियों में, 10 एक साल लड़कों में। फिर देखते हैं व्हाट इज डिलेड प्यूबर्टी। अब डिलेड प्यूबर्टी की भी डेफिनेशन, एक सिंपल या सरल डेफिनेशन ढूंढना मुश्किल है, बट रफली यदि 14-15 साल तक बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम उसे डिलेड प्यूबर्टी कह सकते हैं। अब ये जो शब्द है ग्रोथ, दिस वर्ड ग्रोथ इज ऑल्सो a very complex word because it means different things to different people. So what kind of growth do you observe during puberty? Adita Delani ji has also joined us. So let's see, let's ask everybody, if you've seen anybody experiencing puberty, बच्चों में, grandchildren में, neighbors के बच्चों में, what are the changes that you have seen? What comes first? What comes later? एंड जोशी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस। जो 4 फेजेस हैं बटरफ्लाई के, वो है अंडा, दैट इज एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और वयस्क। ये 4 अवस्थाएं हैं बटरफ्लाई की या तितली की। एंड ये जो जादू है, जो करिश्मा है कुदरत का, यही चीज ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है, बस ये हमें प्यूबर्टी के टाइम दिखाई देती है। यूजुअली व्हाट हैपेंस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इज कि जब प्यूबर्टी आने वाली होती है तो देयर इज अ ग्रोथ स्पर्ट। प्यूबर्टी से पहले देयर इज अ डिप इन ग्रोथ वेलोसिटी, विच मीन्स कि आपका बच्चा ठीक बड़ा होता जाएगा 6, 7, 8, 9 साल की उम्र तक। हर साल स्कूल की यूनिफॉर्म बदलेगी, जूते बदलेंगे और हाइट भी बढ़ेगी। मगर उसके बाद एक डिप आता है, दैट डिप इज अ प्री प्यूबर्टी डिप, और ये पेरेंट्स गेट अपसेट, बट एक्चुअली इट टेल्स अस कि अब प्यूबर्टी आने वाली है। जब प्यूबर्टी आती है, सडनली देयर इज अ ग्रोथ स्पर्ट, द ग्रोथ वेलोसिटी इंक्रीजेस, हाइट की जो स्पीड है बढ़ने की, वो बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ती है तो और चेंजेस भी आते हैं। हल्का सा डार्कनिंग ऑफ कंप्लेक्शन, एक्सिला में, बगल में बाल आने शुरू होते हैं, नीचे प्यूब्स में, विच मीन्स प्राइवेट पार्ट्स में, वहां पे भी बाल आने शुरू होते हैं, और ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है प्राइवेट ऑर्गन्स की। इसके स्टेजेस होते हैं, वी कॉल इट टैनर स्टेजिंग, TANNER। तो यदि आप देखेंगे ऑनलाइन, वेरी इजीली यू कैन जस्ट गो फॉर टैनर स्टेजिंग, TANNER, एंड यू कैन स्टेज अ पर्टिकुलर बॉय और गर्ल। एंड डॉक्टर भालचंद्र मिश्रा हैज आल्सो जॉइंड अस, वेलकम सर। टैनर स्टेजिंग के 2 हिस्से होते हैं। वन इज PH, दैट इज प्यूबिक हेयर। तो इसकी स्टेजिंग है 1, 2, 3, 4, 5। तो आप बच्चे के बाल देखते हैं नीचे कितने हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि बच्चा PH1 या PH2 या 3 या 4 या 5 में है। दैट हेल्प्स यू ग्रेड द प्यूबर्टी। इट इज इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन, इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रेड, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन चेक कि ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं। तो मान लो आज मरीज मेरे पास आए और वो कहते हैं जी ग्रोथ नहीं हुई, एंड मैं कहता हूँ जी पर पिछले साल से तो अब में बहुत फर्क है। पेरेंट्स कहते हैं जी बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तो यू हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस ईयर्स नोट्स एंड यू हैव टू सी कि हमने तब PH1 या PH2 या PH3 सीखा था, एंड यू कैन कंपेयर विद टुडेज सिचुएशन। PH staging will be there for both boys and girls. बॉयज में हम G staging भी करते हैं, that is genital staging, and that depends upon the color and the staging बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होती है। G staging बॉयज में होती है, और गर्ल्स में हम करते हैं B फॉर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट स्टेजिंग। तो ब्रेस्ट के साइज से हम B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे लिखते हैं, एंड ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इट एक्चुअली हेल्प्स बिकॉज इट टेल्स यू द स्पीड एट विच यूर। सो प्यूबर्टी की स्टेजिंग हम करते हैं, pubic hair, size of the private parts in boys, and size and shape of the breast in girls. ये तो फिजिकल चेंजेस हुए, पर और चेंजेस भी आने शुरू होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राइवेट पार्ट्स, बच्चे की हाइट बढ़नी शुरू होती है, एंड यू विल सी कि किसी के हाथ पहले बढ़ रहे हैं, किसी के टांगें बढ़ रही हैं, बाजुएं बढ़ रही हैं, बट फाइनली एट द एंड ऑफ इट आई एम रिमाइंडेड ऑफ दिस स्टोरी, द अगली डकलिंग। अब अनामिका अनु जी भी आ गई हैं, एंड अ क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी इज, अगली डकलिंग किसकी लिखी हुई किताब है? Who wrote it and what's the story? और वो जो अगली डकलिंग थी, वो बड़ी होके क्या बनी?
अगली डकलिंग वाली स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर चिल्ड्रन हु आर गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, गोइंग थ्रू एडोलेसेंस एंड हु हैव क्राइसिस ऑफ सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज। बच्चों को लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, उसकी वजह से उनको लगता है कि वो सक्षम नहीं होंगे लाइफ में। वो उन बच्चों को देखते हैं जो उनसे 1, 2, 4, 6 साल बड़े हैं, जो उनके रोल मॉडल्स हैं। मे बी स्कूल के कोई प्रीफेक्ट हैं, कोई हाउस कैप्टन है, तो उनको लगता है कि ये वाले भैया बहुत स्मार्ट हैं, ये वाली दीदी बहुत सुंदर हैं, मैं उनकी तरह क्यों नहीं हूँ? So then this story of the ugly duckling comes in very handy. So again, a question for everybody: who wrote the ugly duckling, and what did the ugly duckling actually turn out to be? तो प्राइवेट पार्ट्स की ग्रोथ, पूरी बॉडी की ग्रोथ जो कि ऊबड़ खाबड़ सी चलती है। लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे दाढ़ी आना, मूंछ आना, बॉडी पे बाल बनना। लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट साइज बढ़ना और पूरी बॉडी की शेप बढ़ना, कॉन्टूर चेंज होना। And thank you, Pooja ji. That's right. It's a fairy tale written by Hans Christian Andersen, a very popular children's author. और हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने किताब लिखी द अगली डकलिंग। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस पे लिखी, एंड वो अगली डकलिंग फाइनली कौन सा एनिमल बना, लेट्स फाइंड आउट। वो कौन सी बर्ड थी एक्चुअली? पूजा जी विल हेल्प अस आउट विद दैट। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते हैं, एंड यू कैन सी दैट द चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग प्यूबर्टी। बट जो बिगेस्ट चैलेंज है दैट इज द मेंटल पार्ट, द सोशल पार्ट। तो अब जो सेहत की डेफिनेशन होती है, हेल्थ की डेफिनेशन, दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, तो वो हम बात कर ही रहे हैं। इट इज रिलेटेड टू मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों में। बच्चों की बॉडी में चेंजेस आते हैं, दे रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, दे फील अफ्रेड, दे फील कंफ्यूज्ड। कुछ एक घरों में दे हैव समवन टू रीच आउट टू, they might be able to speak with their father or mother, or maybe a younger uncle or auntie, or maybe an elder cousin or sibling, brother or sister. But then there will be other homes जहाँ पे कोई है नहीं बात करने के लिए, या ठीक तरह से बात नहीं की जाती। ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं? They will reach out to their friends, they will reach out to other sources of information, maybe internet, and वो अब sources of information इतने हैं, we don't know कि उनको सही information मिले या गलत मिले, तो कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है। फाइनली सब ठीक हो जाता है, जैसे पूजा जी कहते हैं द अगली डकलिंग बिकेम अ स्वैन, वो हंस बन गए, बहुत सुंदर सी बर्ड। तो जब वो डक्स के झुंड में थे, बतखों के झुंड में थे, तो सब बतखें मजाक उड़ाती थी बच्चे का कि तुम एबनॉर्मल हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, यू आर अगली। पर एक्चुअली वो डक थी नहीं टू बिगिन विद, इट वाज एक्चुअली अ स्वैन। वो हंस ज्यादा सुंदर बर्ड थी। एंड थैंक यू डॉक्टर शिवलता चटवाल मैम, यस, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन इज द राइट आंसर। एंड वो जब स्वैन बन के उड़ गई तो इट बिकेम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल बर्ड्स। ऐसे ही हमें सब बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। एनीवन गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, द लीस्ट वी कैन डू, द लीस्ट वी कैन डू इज टू टेक केयर ऑफ देयर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ एंड टेल देम दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज एंड फाइनली यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूटीफुल स्वैन। और एक और हमारे पास हंस आ गए, एक बड़े हैंडसम हंस, इनका नाम है ललित कथुरिया साहब, और ये लीडिंग बिजनेसमैन है हरियाणा के। गुड इवनिंग सर जी। So we were asking everybody, what experiences have you had in puberty, or maybe someone whom you know? Any challenges that you had, anything that you could not handle? Physical health, या emotional health, psychological health? और जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें याद कराता है, और निर्मला गुप्ता जी भी याद कराती हैं, नमस्कार मैडम, हेल्थ के और भी पहलू हैं। तो वी हैव स्पोकन ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल, बट सोशल हेल्थ भी एक चीज है। सोशल हेल्थ ये है कि जब प्यूबर्टी हो रही है तो सडनली चेंजेस अकर, सोसाइटी भी आपको अलग तरीके से देखती है। तो हाउ डू यू हैंडल दोज सोशल चैलेंजेस? एंड वैभव शर्मा जी भी हैं हमारे साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वार्म वेलकम वैभव जी। सिंपल थिंग्स, लड़की को अभी तक तो लगता था कि मेरे पापा, मेरे अंकल सब मेरे साथ खेलते हैं, अब वो मुझको उठाते नहीं है। नाउ दे डोंट प्ले विद मी एनी मोर। तो द गर्ल थिंक्स व्हाट्स रॉन्ग विद मी। सडनली पहले फ्रीडम थी खूब घर पे, द गर्ल वाज अलाउड टू गो वेरेवर शी वांट्स, वेरेवर शी डजंट वांट, एंड अब सडनली मम्मी और मासी और नानी टोकती हैं या दादी टोकती हैं कि घर पे बैठो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। सो देन अगेन द गर्ल गेट्स कंफ्यूज्ड, एंड लाइक डॉक्टर शिवलता चटवाल मैडम says, children become aggressive during puberty. And we have with us one of the most dynamic endocrinologists in the country, and that is Dr. Mohan T. Shenoy. Warm welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. We had introduced you earlier, Dr. Shenoy, but we'll do it again. Dr. Mohan T. Shenoy is a consultant endocrinologist at Shri Gokulam Medical College in Trivandrum, Kerala.
He is on the editorial board of the prestigious journal Thyroid Research and Practice. And he is also the recipient of the Nagoji Rao Memorial Gold Medal in MBBS. He works for so many journals, so many causes. But I think one cause that is very close to his heart is endocrine awareness. He works through the Endocrine Society of India and beyond that as well to make everyone aware about hormonal health. So, Dr. Shinoy, we've been talking about puberty. We talked about the various glands, the various hormones, and we were talking about physical changes, Tanner staging. We were talking about emotional, psychological, and social changes. एंड ए पटेल साहब कहते हैं कि टीनेज में सडनली लाइक्स एंड डिसलाइक्स बदल जाती हैं एंड वैभव शर्मा जी वैभव जी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही वेलकम्स यू एंड ही सेज वुड यू लाइक टू कंटिन्यू द डिस्कशन फर्दर सोशल हेल्थ इन प्यूबर्टी व्हाट आर द चैलेंजेस ठीक है. So thank you Kalra sir for that kind introduction. नमस्कार सभी लोगों का. Thank you for having me KK Talks. I think it's the second time I'm doing this KK Talks. So it's my honor and pleasure to be interacting with my mentor, my Guruji, Dr. Sanjay Kalra sir. So I think social health is one of the determinants which is important because अभी जो देख रहा है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में वी आर गोइंग थ्रू. ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू सो मेनी डिफिकल्टीज. तो अभी जो दो बात है, प्यूबर्टी एक है और एडोलेसेंस अलग है. सो प्यूबर्टी का मतलब है कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स होता है, जो मानसिक है और शारीरिक है. और दूसरी तरफ से एडोलेसेंस ये बोलते हैं जो प्यूबर्टी के बाद में जो भी होता है ना, तो वो साइकोलॉजिकल है और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन्स है. तो अभी प्यूबर्टी में जो भी होता है वो हमारा साइको सोशल भी है, वो फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, सपोर्टिव भी है. बट एडोलेसेंस जो भी हो गया है बाद में, उसके ऊपर में जो भी है वो ओनली इमोशनल एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ दैट पर्सन. सो एडोलेसेंस इज एक्चुअली एन ओवरलैप स्टेज. तो आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है. क्या है सोशल हेल्थ प्यूबर्टी में? प्यूबर्टी में जो भी होता है हमारा फैमिली में बैकग्राउंड का, फैमिली में जो भी हम सुनते आ रहे हैं, अभी जो कनेक्शन दो पहले जमाने में था, जब माता और पिता और बेटा और बेटी, क्या वो नहीं है अभी. वो जॉइंट फैमिली से चेंज होके वो न्यूक्लियर फैमिली से, अभी न्यूक्लियर फैमिली से थोड़ा हटके दो फैमिली में जो भी इश्यूज होता है वो भी इम्पैक्ट होता है प्यूबर्टी में. तो आई थिंक वी हैव गॉट अ मेंटल स्पेशलिस्ट आल्सो टू हेल्प अस टू दिस. सो वो होलिस्टिक टर्म है. जब कलरा सर जब कहते हैं वो होलिस्टिक होता है, जो एक ही डेफिनेशन से नहीं चलता है. सो हेल्थ हैज गॉट फिजिकल, इमोशनल, सोशल, देन आल्सो ऑल द अदर कंपोनेंट्स आल्सो एडिंग टू दैट. हार्मोनल हेल्थ भी उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो ये जो सोशल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, you are an endocrinologist and you are also trained as a pediatrician. So you are able to see young patients through a very comprehensive lens. अलग-अलग तरीके से देखते हैं. You are a father as well, Dr. Mohan, and you are a son. तो इतने अलग-अलग पहलू से आप देखते हैं प्यूबर्टी वाले बच्चों को. What are some of the common challenges that you encounter in puberty? Yeah, so that question is very important because अभी लास्ट टू इयर्स में जो भी ऑनलाइन एजुकेशन में हम देख रहे हैं कि अब अभी का चैलेंज एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन चैलेंज है, जो लास्ट वीक मेरे पास आया था. एक 2 इयर्स के पहले से अभी जो आ रहा है, वो पेशेंस जो है पेशेंस का वो अभी बहुत कम हो गया है. तो मेरे पेशेंट्स को ऐसा नहीं होता है, बट आई फाइंड दैट सम डिजिटल अभी जो डिजिटल सैवी हो गए हैं, प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा डिजिटली करते हैं, या बहुत काम जो है इंटरनेट से वगैरह करते हैं, तो ज़्यादा पेशेंट या पीपल को वो जो चीज़ उनको नहीं चाहिए समझ, वो अभी आ गया है. तो ओवर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट चैलेंज दैट आई एम फेसिंग. सो दैट केप्ट असाइड, जो प्यूबर्टी में जो इम्पोर्टेंट चैलेंज है ये है अंडरस्टैंडिंग का. because we have got delayed puberty, precocious puberty और also variations of normal puberty. जो normal भी puberty है उसका भी variations भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है. अभी जो पहले ज़माने से ज़्यादा early puberty आ रहा है, because that is called early puberty. तो वो भी एक बहुत important challenge है. और हमारा पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को वो समझ आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो पहले ज़माने में जो भी खाना घर में बनाया जाता, अभी तो चेंज करके रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑयल फूड ज़्यादा, और जो भी फास्ट मिलता है वो अभी उसका पसंदीदा खाना होता है.
अभी फेस्टिवल भी सीजन के माहौल है, सो स्वीट्स जो भी लेता है उसके साथ एक्सरसाइज करने का जिम्मा होता है हमारा सभी में, वो थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। और एक्टिविटी हमको जैसे भी उसको बोले फिजिकल एक्टिविटी कर रहे, मैं बहुत दौड़ता हूँ ऐसे ही बोलते हैं। दौड़ना के बिना इफ यू आर इवन सिटिंग डाउन, मे बी वॉकिंग, यू आर मूविंग योर लेग अराउंड, पेडलिंग करना, या सुबह सुबह उठ के थोड़ा योगा वगैरह करना, थोड़ा और तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक फिटनेस शुड बी पार्ट ऑफ एवरी पर्सन्स लाइफ, एंड मोर सो व्हेन द पर्सन इज इन एडोलेसेंस और इन प्यूबर्टी। सो यू टॉक्ड अबाउट अर्ली प्यूबर्टी एंड हम इसकी भी बात कर रहे थे कि डेफिनेशन क्या होती है। एंड वैभव शर्मा जी, वैभव इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही सेज दैट इन puberty what happens is that children begin comparing themselves with other people, तो वो upset हो जाते हैं। We also spoke about the ugly duckling, so how the ugly duckling changed into a swan, and that is how you can counsel children going through puberty. सीमा जी पॉइंट आउट करती हैं कि once your child attains puberty it feels as if the neighbor's child is living in the house, सब माहौल बदल जाता है। इसका सीमा जी कहेंगे कि एक होता है empty nest syndrome and एक होता है noisy nest syndrome, and you can choose anyone. So empty nest versus noisy nest, and all of us I think would say that yeah we are happy with noisy nests then, अगर इन्हीं दोनों ही choose करना हो। Okay, digital detoxification is impossible, मैडम कह रही हैं, as a parent she says। बराबर है, बराबर है। तो she says ऐसे कौन से hormones हैं, what is it which makes teenagers like to close their doors and live behind curtains? Why do they want privacy? या तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम टीनेजर्स के बात छोड़ो, अभी छोटा बच्चा होता है तो वो टॉयज शेयर करने का वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है। वो हम सिखाते थे पहले में, जो भी टॉयज आता था, 4 बच्चे थे घर पे, वो बोलते थे ये टॉय शेयर करो उससे। वो भी अभी बहुत कम दिख रहा है। वो अभी न्यूक्लियर फैमिली का भी इम्पोर्टेंट है। तो प्राइवेसी इज देयर फॉर एवरीबडी। तो ये छोटी उम्र से ही वो शुरू होता है। तो जो टाइम, प्राइवेट टाइम उसको स्पेंड करता है, बेटा बेटी या किसी को, अभी जो भी होता है प्राइवेसी में, जो डोर बंद करके मुझे टाइम दे दो, मुझे पसंदीदा फूड दे दो, घर के यहाँ पे मनवा दो। जो फ्रेंड्स जो भी आता है घर में, वो दे विल टेल आई डोंट वांट टू कम आउटसाइड द हाउस। मेरे पास ऐसा भी एक बेटा पेशेंट आया था कि घर रूम से बाहर नहीं निकलता है। वो पेरेंट्स डर गए थे क्या हो गया उसको, क्या टेंशन है। वो उसका प्रॉब्लम क्या था, वो शाई हो रहा था। वो उसका प्यूबर्टी का एक्ने दिखाने के लिए, एक्ने होता है पिंपल्स जैसा, वो दिखाने के लिए, या उसमें जो मेल ब्रेस्ट बोलता है ना, तो ब्रेस्ट ज्यादा मेल्स में भी हो जाता है, तो उसका भी प्रॉब्लम है। तो मे बी पार्ट ऑफ द पर्सन्स इमोशनल स्टेबिलिटी। तो प्राइवेसी हम सोचते होंगे, बट आई थिंक इट इज मोर सो विद द पर्सन्स मेंटालिटी, जो उसका टाइम में जो वो उसमें माइंड में होता है। तो यू शुड फाइंड समबडी वेयर द पर्सन कुड रिवील व्हाट इज हैपनिंग थ्रू देम। तो ये लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पेरेंट्स उनका, टीचर्स को, या क्या हो रहा है मेरे बेटे को, और जस्ट टेक इट लाइटली, और मे बी कनेक्ट विद द पर्सन हु कैन रिवील इट। इट मे नॉट बी अ डॉक्टर, इट मे बी सम एल्डरली पर्सन whom that kid may be familiar with। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है, अभी अब्यूज भी बहुत ज्यादा हो गया है, बिकॉज लास्ट 2 years के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चे घर पे ही रहते हैं, उनका डोमेस्टिक सर्वेंट्स या कुछ पेरेंट्स का कोई रिलेटिव्स कोई भी होता है, तो दैट इज ऑल्सो गेटिंग रिपोर्टेड मोर। तो आई थिंक चिल्ड्रन में जो भी होता है, आई थिंक वी शुड टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, एंड आई थिंक वी शुड ट्राई टू वर्क आउट बेटर वेज टू सॉल्व इट। तो प्राइवेसी की बात बोला है, प्राइवेसी इज एवरीबॉडीज राइट, बट I think you should tell whatever it's hurting you then only, because children don't know to whom to tell these things to. That may be the reason why they think they are telling these problems. It's a good idea to talk. And Dr. Mohan, so many times in life we see that there are communication gaps. Now, what is the treatment for a communication gap? Okay, so communication gap hota hai because that person has a problem with getting the right message across. So I was also having that problem because when I was passed from the DM exam and all, I thought that everyone will come to me because my degrees hai, मेरे को देखेंगे या मेरे parents को पता है वो देखेंगे। So I think then I realized that it's not because of your degrees or because of your famous parents or something. It's because of the way you can connect with that person. तो आई थिंक कम्युनिकेशन विद वेरी सिंपल मैसेजेस, जैसे कि 1 or 2 लाइन्स में जो भी बोल सकते हैं, आई थिंक न्यू बिगिनिंग, समथिंग वी कैन टेल द पर्सन। सो आई थिंक कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट होता है बिकॉज देयर इज अ डिस्कनेक्ट समवेयर। So the person may not be knowing what is something deficiency in that person. So that may be because of that small issues maybe. So I think अभी जो प्रेशर होता है मोस्टली कंपैरिजन या कंपटीशन से ही होता है।
So because people are so much competitive, they want to become the children to be the first. International स्कूल में पढ़ाते हैं और टॉप मार्क लेने के बोलते हैं. ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा हो गया. अग्रेसिवनेस, आई थिंक शुभलता चटवाल मैडम बोलती थी, अग्रेसिवनेस भी हो गया है. तो जो भी बच्चे होते हैं, वी शुड एक्सेप्ट देम हाउ दे आर and try to solve those issues by talking to them. I think private में talk कर सकते हैं, या parents, I think when they bring to a doctor, maybe the child may feel that they are telling the bad aspects of that child, so that person may not be happy to tell those things. So my suggestion is the school teacher or somebody who has seen the child more often, behavior कुछ change हो गया है कि नहीं. So communication gap is usually because of the small issues which people can mend only by maybe ego थोड़ा हटा के, हमारा बेटा है, इसका बेटा नहीं है, ऐसा नहीं है. तो कुछ भी होता है, हमारा सब कुछ फैमिली में होता है, तो कम्युनिटी में बढ़ना है. So maybe somewhere down the line, people should start taking it to a very emotional, should be less only. And for communication gap, the only treatment is communication. So at least Yes. we begin communicating, and you begin at multiple levels. Communicate with your teachers, जो बच्चों के टीचर हैं. PTM में जाते हैं, मैं अब तो मेरे बच्चे बड़े हैं, so but I remember one of the scariest things in life used to be going for the parent teacher meeting. I would always be so afraid and petrified कि हम डांट खा के आएंगे. But I would see other parents, they would go and scream and abuse the teachers. अब बच्चे के आ रहे हैं 33% या 20%, पर बाकी बच्चे तो उसी क्लास में 199 भी ले रहे हैं, and they would not find fault with their child, they would just blame the teacher and the principal. So in such a situation, the teacher is going to become defensive. Even if something is wrong with your child, she is not going to reach out to you and tell you. So the first thing is, when you go to the school, when you go to parent-teacher meeting, please be polite to the teacher, to him or her. That's the first thing. Be polite. Communicate properly. Communicate with madam the way you would want to be communicated with. And to tell her, madam, if there is anything that you want to tell me about my child, kabhi bhi ho, I am just a phone away, and I look up to you because you are taking care of my child. Itne mein, the work is 99% done. So that is one level of communication. Second is with the child yourself. Speak with the child and behave the way you would want your child to behave. If you are going to be rude with the domestic help or with the maid or with the gardener, then the child is going to learn that from you. The child is first going to be rude with the domestic maid. That time you will not mind. Then the child is going to be rude with the grandparents. You might laugh it off. And then the child is going to be rude with you. And then you will not be able to change things. So communicate properly in a very soft way. And now directly with the child, बात करें, just keep on speaking. अब मान लो मैं और डॉक्टर मोहन हम आपस में बात करना चाहें, एक हायरार्की होती है कम्युनिकेशन की. हायरार्की में होगा, पहले डॉक्टर मोहन हाउ आर यू, डूइंग वेल. डॉक्टर मोहन कहेंगे हाँ जी डॉक्टर संजय आप ठीक हैं कि नहीं, सेहत कैसी है, आपका वेट कितना बढ़ा पिछले महीने में. सो यू नो स्मॉल टॉक के बाद उसके बाद बारी आएगी, हाँ यार मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है आज और मेरे को समझ नहीं आ रही, एवरीबडी एल्स इन द ओपीडी स्पीक्स अबाउट हाई बीपी, मेरा तो बीपी लो हो रहा है, तो व्हाट डू आई डू. You know that comes with time, and then Dr. Mohan will help me out. अब वो टाइम तो दो ना बच्चे को, तो you say hi hello स्कूल कैसा था, सब कैसा था, पेट दर्द तो नहीं हुआ, and then अगर कोई इशू है the child will come out with it. It might be a very simple issue, Dr. Mohan, like सुमिता चौहान जी कहती हैं, वो कहती हैं acne in puberty. अब किसी भी लड़के या लड़की को acne हो, तो for us it's not a major issue, but for the child it is earth shattering. So how do we handle that, and how do you counsel the child? मुझे भी था एक्ने, अभी भी मुझे भी है. तो आई थिंक एक्ने जो होता है एक्चुअली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इश्यूज. टेस्टोस्टेरोन जब होता है टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, and I think it's produced from the gonads. We have gonads in the males. So अभी females को भी acne होता है. That's because of the dry skin. sebum उसमें होता है, we call it sebum. तो seborrhea भी also होता है. And females also can produce testosterone from the adrenal sources or from the fat sources. Ovaries भी थोड़ा estrogen के अलावा conversion pathway से androgens भी produce कर सकते हैं. सो आई थिंक प्यूबर्टी टाइम में जो होता है, बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है या वेट बढ़ जाता है या उसका खाना मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक दैट. बट बिसाइड्स दैट ऑल्सो नॉर्मली प्यूबर्टी में थोड़ा बहुत एक्ने होना मुमकिन है, इट्स पॉसिबल. एंड basically it's because of the person's hormonal changes, and these emotional hormonal changes often interplay. जो भी हम बोलते हैं स्ट्रेस हो जाता है. स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, because I think sleep deprivation, yeah, emotional disturbances, all those things can worsen the acne.
But I think solutions to this is not to reduce the tension. So the first thing would be to get oily products away from the person's diet if possible in that period, or if possible to get the skin properly hydrated, and to seek any help if you require any special things. But soap bhi jo use karta hai, if you, even if you use a soap which doesn't have the proper pH, that's also a problem. तो स्किन डेलिकेट हो जाता है, तो दैट टाइम द स्किन becomes having a problem. So all those things, I think we should work with the skin specialist, endocrine specialist. If you have a general practitioner, you can also ask them. So maybe simple things can be tackled. जब hair हो जाता है, hair आ जाता है, उसके साइड में ही acne हो जाता है. So most often there are two types of acne: cystic acne and other follicular acne. So I think the one which is harmful is the cystic acne. तो if it is actually growing more and more, तो उसमें बाद में उसका प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाता है, निडस हो जाके उसका that can have infection also. But otherwise ये घट जाता है, it goes away with time. Vinny Joglekar has logged in. Madam is a nutritionist from Bangalore. And Ajay Kumar Rajput ji bhi hain. Warm welcome, sir. Seema ji ek counseling tip share kar rahi hain. Madam is from Kolkata. She says that I tell children that acne is their star mark. It's a sign of growing up. It's a sign of becoming an adult, and you should feel proud of it. It will pass with time, and later on you will miss it. So that's a nice way. Another counseling that she does is she tells them to drink 1 glass of water extra. Correct. And that will reduce the acne because it makes the skin healthier. Dandruff can also lead to acne, so we have to correct that. Other things you can do are, अब जो बच्चा है ना जो puberty वाला, अगर आप बच्चे को dependent रखेंगे, if you hand down to the child कि ये ले बेटे, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, the child is not going to be happy. Now you have to make the child come up, and this is anything, whether it is acne or any other thing, maybe burning micturition, burning in urine, weight, stomach pain, anything. Now see this approach. एक अप्रोच ये है, बेटे तुम्हें एक्नी हो गया है, तुम अपने खाने का ख्याल नहीं रखते, सब तुम्हारी गलती है, तुम पिज्जा बर्गर चाउमीन सब बंद कर दो, नहीं तो बीमार हो जाओगे, बाद में तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, फिर मत कहना मुझे. दैट्स वन टोन. अनदर टोन इज, बेटे ये एक्नी है, नाउ है तो बड़े होने की निशानी, बट वी नो दैट वी डोंट वांट इट, सो व्हाई डोंट वी कीप अ फूड डायरी. व्हाट डज फूड डायरी मीन? एवरीडे एक्नी इज नॉट द सेम. जब जब एक्नी ज्यादा हो, व्हाई डोंट यू राइट डाउन what you ate 24 hours or 48 hours preceding that. If you are able to find any identifying factor, any aggravating factor, then we just get rid of that. Let me give you a hint, bete. Now some of these aggravating factors can include tea, coffee, burgers, chow mein. It's not the burger or chow mein which is bad, it is the masala or the spices which are bad. So you see, when mummy makes noodles at home, the taste is different. When you eat from outside, it's different. The reason is that they put a lot of ajinomoto, which is also called Japanese salt, or Hindi mein Chinese namak bolte hain isko. And they put many spices and coloring agents. We really don't know what is in those coloring agents. They might be causing the acne. So, bete, why don't you look at your diet and see what happens? एक और टोन देखते हैं. मे बी द चाइल्ड इज ओबीज. तो यहाँ पे ये आएगा कि हाँ बेटे, जब ये जो एक्नी आती है ना, जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है तो एक्नी बढ़ती है. मुझे भी थी जब मैं छोटा था. तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और पसीना निकालेंगे, इफ वी टेक आउट ऑल द स्वेट, तो स्वेट के जरिए ना ये एक्नी भी निकल जाएगी, वो एक्नी बह जाएगी. द एक्नी विल गेट वॉश्ड अवे with the sweat. So maybe we can do that, but young lady, it's up to you. Finally, it's your face. You have to decide how you want to look. So I personally think 20-30 minutes of sweating exercise a day should be fine. You can begin skipping. If you don't know how to skip, you can just do hop, skip, jump. If you can't use a skipping rope, but it's up to you, young lady. Finally, you are in charge of your health. ऐसे करके छोड़ दो and see what happens. So, Dr. Mohan, what kind of counseling tips do you use in your OPD when you are faced with a difficult pubertal child? Yeah, so abhi jo I think case examples are very important. The difficult pubertal child had come, I think, very recently. I think that person wanted to become opposite gender. So अभी 15 years का age है. I think I don't want to reveal any names here. So biologically that person is a female. अभी अभी जो माइंड में होता है उसका थॉट्स में बोल रहा है मुझे एक मेल बनना है. तो तो वो हमको ये इस टाइम पे जेंडर डिस्फोरिया हमको पता होना था, बिकॉज दैट टाइम वी थिंक व्हाट इज हैपनिंग टू दैट पर्सन.
प्रीवियसली हमारे सिलेबस में इसके बारे में कुछ बात नहीं था, बिकॉज दोज थिंग्स वेर टोल्ड ओनली व्हेन इट्स रिक्वायर्ड ओनली। बट नाउ पीडियाट्रिक एज इज नाउ गोइंग अप एंड अप। अभी 18 हो रहा है, बिकॉज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बोला है 18 ईयर्स तक वी कैन एक्सेप्ट एम एस पीडियाट्रिक, बट इंडिया में 15 तक या 12 तक ही बोलते हैं। तो दिस चाइल्ड, दिस पर्सन, वी कैन टेल इट्स अ पर्सन बिकॉज 15 ईयर्स उम्र है, अभी 10th ग्रेड पास हुई है, एंड अभी एग्जाम अच्छी किया है, बट दैट पर्सन कुड हैव परफॉर्म बेटर। उसका माइंड में हर टाइम पे उसको मेल बनने का उसका इरादा है। तो वो बॉडी शेप के बारे में या बॉडी फिगर के बारे में, जो भी है चेस्ट के, ब्रेस्ट के, वो सब कुछ उसको कटाना इसका मंगता बोल रहा है। सो आई थिंक द इमोशनल कंपोनेंट ये ऑलरेडी 1 ईयर से उसका माइंड में चल रहा था, एंड दैट पर्सन वेंट टू अ डॉक्टर ऑल्सो, पर्सनली पूछ लिया था, उसको कन्वर्शन थेरेपी किया था, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड इन आवर प्लेस, बट उसको एक्चुअली साइकोलॉजी साइकेट्री से काउंसलिंग करवा के उसको जेंडर ठीक ऐसे ही रखने के लिए उसको फोर्सिबली किया था। तो उसके बाद उसने बाद में 1 ईयर आफ्टर ऑल दीज थिंग्स द पर्सन हैड कम टू आवर ओपीडी। अभी मेरा प्राइवेट क्लिनिक नहीं है, तो पेशेंट सब देखने के बाद ही उसको मुझसे मिल पाए। तो फाइनली दैट पर्सन वाज नॉट टेलिंग एनीथिंग टू मी। सो वो फादर मदर को पूछो, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, तो ऐसा बोल रही थी। तो मुझे 1 आवर हो गया सजे सर, ये 1 आवर एक पेशेंट के लिए। मुझे काउंसलिंग कुछ पता नहीं है, बट आई जस्ट आस्क्ड द पर्सन। हमारे एक टेक्निक है जब हम एएसआई में करते थे, वो मोटिवेशन इंटरव्यूइंग टेक्निक है। तो इट्स कॉल्ड मोटिवेट द पर्सन टू विन 3 मिनट्स टाइम। जो भी उसका टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट होता है, अभी जो खेल में होता है पावर प्ले बोलते हैं ना, तो ऐसे 6 आवर्स का पावर प्ले, जैसे ही मेरे पास 3 मिनट्स का टाइम दे दो। वो खेल में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो बोला तो दैट पर्सन टोल्ड दैट आई हैव अ जेंडर प्रॉब्लम, आई वांट टू बिकम ट्रांसजेंडर, ऐसा बोला। तो आई टोल्ड डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स नाउ। तो मेरे हमारे स्ट्रेंथ एक बुक है एक्चुअली, सर के साथ हमने एक गाइडलाइंस भी लिखी है। तो इस रिगार्डिंग पीडियाट्रिक जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस, जब गूगल भी कर सकते हैं, यू कैन फाइंड इट आउट, इट्स वेरी सिंपल। इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर एक आर्टिकल एक बुक में पब्लिश भी हुआ है, तो आई एम थैंकिंग सर फॉर दैट। तो जो जो सबक मुझे मिली वो चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए, वो मुझे बहुत फायदा हो गया। So I was able to tell that lady that you are a very beautiful person. I don't address them as a girl or a male, a beautiful person. तो जेंडर न्यूट्रल तरह से बात करना शुरू किया, और उसको जो पसंद है उसको मैंने एक्चुअली एक पेज दे दिया, जो भी उसको पसंद है मुझे दिख के दिखाओ। वो बहुत इमोशनल थी, बट उसने मुझे एक्चुअली कोऑपरेटिव हो गई बात में। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड अभी ये दिस माध्यम मे नॉट बी इनफ फॉर दिस टॉक, बट जो ये इंटरेस्टिंग केस मुझे सबक दे दी कि आई थिंक यू शुड नॉट टेक एनी इश्यू व्हिच हैपेंस इन प्यूबर्टी, स्पेशली जेंडर प्रॉब्लम्स, वेरी लाइटली। तो जो अभी हो गया है, अभी काउंसलिंग जारी है। मेरे पास एक ट्रेनिंग किया हुआ एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है। तो आई एम एबल टू टेल दैट टेक इट लाइटली, स्लोली हम उसके बारे में पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स तक ही स्टार्ट कर सकते थे, बट इफ साइकेट्रिस्ट परमिट्स अस वी कैन स्टार्ट बाय 16 ईयर्स ऑल्सो। तो ऐसा एक चैलेंजिंग केस मुझे याद आ गया। और भी बहुत चैलेंजिंग केसेस आ गया है, टाइप 1 डायबिटीज जैसे प्रेजेंट हुए हैं, बट आई थिंक दोस कैन बी मैनेज्ड बाय एनी रूटीन पर्सन। बट दिस जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस एंड जेंडर डिस्फोरिया, वो एक्चुअली एंडोक्राइन से हटके है, बट स्टिल दे वांट टू मीट अस फॉर दिस सर। That point is well taken, and ये टॉपिक जुड़ गया ऑफ ट्रांसजेंडर हेल्थ एंड जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस। अब प्लीज डू नॉट ब्रश दिस अंडर द कार्पेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपके पास कोई बच्चा है, कोई एडोलेसेंट है, प्यूबर्टी में से गुजर रहा है और प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव टू आस्क द चाइल्ड। जब तक आप बच्चे को पूछेंगे नहीं, हाउ विल यू नो? सो थैंक्स डॉक्टर मोहन फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। देयर इज अ पॉइंट फ्रॉम पानी पीजिए सर, पानी पीजिए सर। या there's a question from Dr. Khilendra Saxena. Sir is a gynecologist. He talks about polycystic ovary. Would you like to speak about that and adolescence? ठीक है सर, ठीक है सर, पहले पानी पीजिए सर। सो पीसीओएस जो बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो एडोलेसेंट्स में होता है या यंगर चिल्ड्रन में होता है, बिकॉज ऑफ द सिस्टिक अपीयरेंस ऑफ द ओवरीज। ओवरीज में फर्क होता है कि ओवरीज यूजुअली आर शेप्ड इन अ डिफरेंट मैनर, तो वो स्ट्रिंग जैसे दिख रहा है, पर्ल की जैसे दिख रहा है, तो इट्स कॉल्ड पीसीओएस। अभी क्राइटेरिया है, अल्ट्रासाउंड से ही देख सकते हैं, बट इन एडोलेसेंस इट मे बी नॉर्मल ऑल्सो।
Normally even adolescents can have a polycystic appearing ovary. So PCOS is one of the very important causes where we can tell hirsutism can occur. उसमें मेल जैसी हेयर आने का, पीरियड्स मिस होने का, doesn't come regularly, and amenorrhea बोलते हैं उसको, and also they are also having separate issues regarding the diabetes जैसा, pre-diabetes जैसा हो सकता है. So those things kept aside, polycystic appearing ovaries are not bad. They are PCO morphology, but polycystic ovary syndrome, because we syndrome जो होता है, we club two things together. So अल्ट्रासाउंड फीचर्स भी होना चाहिए, हिर्सुटिज्म जैसा होना चाहिए, पीरियड्स मिस करने का, कंसेक्यूटिव पीरियड्स ऐसा ज्यादा मिस करने का, और फाइनली ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर दे आर आल्सो हार्मोनल चेंजेस आल्सो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. आई थिंक जो भी पीरियड्स मिस होना है वो पीसीओएस नहीं है, एंड आई थिंक इट्स एक्सक्लूशन क्राइटेरिया. जो भी हम थायराइड वगैरह, कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम या डायबिटीज का प्रॉब्लम जो भी एक्सक्लूड करने के बाद ही हम पीसीओएस बोल सकते हैं, ना कि वो डायरेक्ट ही पीसीओएस ऐसे बोल नहीं सकते. Thank you, Dr. Mohan, for highlighting that. PCOS के polycystic ovary syndrome, and I think we should have another webinar on this. इसके diagnostic criteria है, मगर adolescence में बहुत मुश्किल है PCO diagnose करना. There are multiple reasons for this, and Dr. Saxena would be better versed than us with it. सबसे पहले तो Dr. Mohan, ideally how should the ultrasound be done? What is the route of doing the ultrasound, and why is it not possible in India, especially in adolescents? या तो यूजुअली हम जो प्यूबर्टी होने के बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं वो ट्रांस एब्डोमिनल करते हैं, बिकॉज वी कैन सी द पेल्विस आल्सो, बट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डूइंग इट इज यूजुअली ट्रांस वजाइनल, और वो डिफिकल्ट होता है बिकॉज अभी जो पता है योनि वहाँ पे जो भी होता है, वी कैन नॉट पुट दोस इक्विपमेंट्स इन दोस एरियाज. वो प्राइवेट एरियाज भी है, वहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगवाने से हमको पता भी नहीं चलता. सो आई थिंक इंडिया इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट थ्रू द पेल्विक अल्ट्रासाउंड बाय द ट्रांस वजाइनल रूट. जब we know that it's not a possible, हमको एक विंडो पता होना चाहिए. we get a window only by doing an echo like thing through the abdomen. अभी अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल जस्ट लाइक एन एको, हमारे बॉडी में जो अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशंस होता है वो पिक करके डेंसिटी देखता है, डेंसिटी वापस आता है, वो डेंसिटी हम पिकअप कर लेते हैं. और जो अल्ट्रासाउंड का इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, जो उनका जानकारी है उसका तरीके से ही कैन शी कैन टेल दैट पॉसिबल. So experience of that person is very important when you are diagnosing something like PCOS. Second thing is the transducer quality is also important. India में जो भी transducer होता है standard, वो ultrasound का transducer different हो जाता है. So important to check the machine which you are done that ultrasound also. And third thing, अभी ultrasound training भी होता है. Gynecologists are also trained in doing ultrasound, but I think in India it's still the radiologists who do that. So we should always check the ultrasound the proper way, and also timing of the ultrasound. अभी जो पीरियड्स मिस हुआ है उसका 3 days के टाइम पे ही करना अच्छा होता है. तो थर्ड डे ऑफ द साइकिल्स दैट इज द बेस्ट वन. बट इफ यू हैव मिस्ड द साइकिल फॉर लॉन्ग पीरियड, लाइक लॉन्ग टाइम पीरियड्स नहीं आ रहा है, दैट इज द राइट टाइम फॉर डूइंग अल्ट्रासाउंड. तो टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट. एंड ऑल्सो अभी एब्डोमेन का ब्लैडर भी होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, ब्लैडर फुल करने का, those things are also kept in mind when doing ultrasound. And Dr. Saxena also agrees with you, Dr. Mohan. He says that no unmarried patient will agree for TVS, neither should we advise them, and we don't advise them also. तो एक तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कि हम डायग्नोज नहीं कर पाते. टोटल 3 क्राइटेरिया हैं पीसीओ डायग्नोज करने के लिए. 3 में से कम 2 होने चाहिए पॉजिटिव. तो एक तो पहले ही आउट हो गया हमारा, बिकॉज द अल्ट्रासाउंड इज नॉट गोइंग टू बी द वे दैट वी वांट इट टू बी डन. इट्स नॉट गोइंग टू बी द वे दैट इट इज मेंशन्ड इन द बुक्स, इन द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. दूसरा रह गया अब मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी. वी आर सपोज्ड टू लुक फॉर ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन का एक तरीका है देखने का. इफ यू सी दैट द पीरियड्स आर रेगुलर, द चांसेस ऑफ ओव्यूलेटरी साइकिल विल बी मोर. इफ द पीरियड्स आर डिस्टर्ब्ड, देन द चांसेस ऑफ ओव्यूलेटरी साइकिल विल बी लेस. बट जैसे कि सब जानते हैं, पहले 2 साल में जब प्यूबर्टी होती है तो वैसे ही इट टेक्स टाइम फॉर द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस टू मैच्योर. So Dr. Mohan, before you came, we had spoken of the hypothalamo-pituitary axis, and we were talking about how the pituitary sends messages through LH, FSH to the ovary. इसको भी 2 साल लग जाते हैं ठीक होने में. तो मान लो कोई लड़की आई एडोलसेंस में, वो कहती है कि मुझे 2.25 साल हुए हैं पीरियड्स को,
किसी साल में 4 हुए, किसी में 8, किसी में 12. तो then also, you can't label that as being abnormal. All you say is let's wait for a year or so and let's see what happens. So in adolescence, it is very challenging to diagnose PCOS. एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, and that is hyperandrogenism. So Dr. Mohan, would you like to speak about that? Clinical Yeah. methods of diagnosing hyperandrogenism and then biochemical methods. Hyperandrogenism is because increased androgen हम बॉडी में आइडेंटिफाई करते हैं. आई थिंक एंड्रोजन होता है मेल हार्मोन, एज यू ऑल नो. तो if the female develops male like features, जब फेस में या चेस्ट या उसका बियर्ड एरिया, हम उसको चिन एरिया बोलते हैं. अभी इंडिया में क्राइटेरिया में साइड बर्न्स इंक्लूडेड नहीं है, बट आई थिंक सम क्राइटेरिया, सम इंस्टीट्यूट्स डू दैट. तो फेस या अपर लिप, लोअर चिन, वहाँ पे, या चेस्ट, या नीचे हाथ में, या in the back area or the axillary area. So there are different patterns of hair also. The male pattern different है, female pattern different है. Males में भी actually normal pattern नहीं होता है. Some males don't have that enough hair also. But normal male pattern usually has got a set area of distribution of the hair also. तो उसमें भी हमको एक क्राइटेरिया है, इसको फेरीमैन गेल्वे क्राइटेरिया बोलते हैं, एफजी क्राइटेरिया बोलते हैं. उसको भी मॉडिफाई करके और 8 एरियाज हमको आइडेंटिफाई करके, उन 8 एरियाज में उसको हमको आइडेंटिफाई करके उनको हमको पकड़ के देखना है. वो अपर बैक, लोअर बैक, चेस्ट, नीचे हाथ पैर, ऐसा बहुत एरियाज है. So you need not check the net and get scared about that. So it's only because to help us identify that. इसके छोड़ के जो मेल का जो भी पैटर्न होता है, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट. तो जो इवन द प्यूबिक एरिया आल्सो उसका एग्जामिन हम नहीं कर सकते, तो हम एक ग्राफिकल फोटो दिखा के, एक्चुअली एक रेडीमेड फोटो भी होता है, तो ये फोटो दिखा के ये स्कोर में 1 2 3 बन के इसमें कितना है, उसमें 0 नहीं है उसमें, तो वी कैन फाइंड आउट हाउ मच द लोवेस्ट स्कोर अवेलेबल, how much the largest score available. So highest score we definitely category all the 8 areas, extra areas, sab kuch mila ke it can be very high also. So if it is more than 8, you can say it is having definite hyperandrogenism, or if it is very severe 20 ke upar, it can definitely require a thorough examination by a specialist or blood test also. अब जो टेलीमेडिसिन भी करते थे पहले में, ये बहुत हेल्पफुल था, बिकॉज पर्सन खुद एक्सामिन करके हमको बोलते थे. अभी टाइम मिलता है तो मैं यूजुअली एक फीमेल एक्सामिन करने के टाइम में एक नर्स को या किसी और को बिठा के ही हमको करना है, बिकॉज उसको प्राइवेसी भी उनको इम्पोर्टेंट है. तो सब मिला के पूछ के डॉक्यूमेंट करके उसके बोलना है इतना तुम्हारा स्कोर है. उसके बाद में उसका लैब टेस्ट करवाना है. लैब टेस्ट यूजुअली टेस्टोस्टेरोन लेवल करते हैं. टेस्टोस्टेरोन ऐसा इंपॉर्टेंट एक हार्मोन जो सेक्रेट होता है गोनाड से. और फीमेल, मैंने ऑलरेडी बोला था, फीमेल्स में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है. तो जब लेवल्स उसका नॉर्मल लैब के लेवल्स के भी ज्यादा होता है, मेल पैटर्न जैसे होता है, we also have free testosterone as a bioavailable marker, but labs में थोड़ा फर्क होता है, so we don't go by that. There are some hormones like dihydroandrostenedione, DHEAs, and there is prolactin hormone there. So there are other hormones which we do when we are having a person with hyperandrogenism. Thyroid mat bhulega, because thyroid is one of the reasons which can prevent a worsening of the hyperandrogenism, because thyroid patients maybe hyperandrogenism can occur because उसका सेकेंडरी हाइपरप्रोलैक्टिन हो जाता है, उसके बाद में उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी फर्क होता है. तो देयर आर मेनी अदर पाथवेज, आई थिंक केमिकल लोचा बोलते हैं. तो दोस थिंग्स आर ऑफन केप्ट इन माइंड व्हेन वी टेस्ट. सो हर पेशेंट में हर टेस्ट नहीं जरूरत है. सो वी हैव टू स्क्रीन देम एंड गेट द प्रॉपर इवैल्यूएशन डन. अभी लास्ट ऑप्शन बोल रहे हैं 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन. दैट इज द लास्ट टेस्ट यूजुअली वी डू, बिकॉज पीसीओ एक्सक्लूड भी किया जो भी होता है उसमें भी कंजेनिटल एड्रिनल इनसफिशिएंसी या CAH बोलते हैं, उसका भी एक इम्पोर्टेंट एक एक्सक्लूजन करना पड़ता है, बिकॉज उसका ट्रीटमेंट PCOS के थोड़ा बहुत डिफरेंट है. तो आई थिंक व्हेन यू काउंसल अ पर्सन, डेफिनेटली डोंट टेल देम सो मेनी थिंग्स. तो 2-3 चीज बोलते हैं, उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंट करके बोल देते हैं. It's a good idea what Dr. Mohan has said. Don't scare the child, but you tell things which are important. And Dr. Saxena also points out Rotterdam criteria में TVS की जगह सर yes 2 out of 3 are required. So एक तो हो गया अल्ट्रासाउंड, एक हो गया LHFH रेशियो नहीं आएगा सर डॉक्टर सक्सेना उसमें.
इसकी जरूरत भी नहीं है करने की, मगर सीरम टेस्टोस्टेरोन जरूर रहेगा. You need biochemical or clinical demonstration of hyperandrogenism. Even clinical actually, that also might suffice. तो दो तो चाहिए ही चाहिए. अल्ट्रासाउंड आउट हो गया बच्चों में, तो आपके पास बचा टेस्टोस्टेरोन, एंड देन यू हैव टू प्रूव एनोवुलेटरी पीरियड्स और पीरियड्स में गड़बड़. अब वो भी बच्चों में, क्योंकि हिस्ट्री इतनी रिलायबल नहीं होती, एंड साथ में पहले 2 साल तो लगने ही लगने हैं उसको एक्सेस को मेच्योर होने में, तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सीरम टेस्टोस्टेरोन रह जाता है, या अगर बहुत ही क्लियर कट क्लिनिकल एविडेंस ऑफ हाइपरएंड्रोजिज्म हो. We would also like to mention that all hyperandrogenism is not polycystic ovary. It can be familial also. तो आप ethnic group के हिसाब से, social group के हिसाब से देखें. And what I tell the girls is कि बेटे इतने सुंदर हो तुम. अब देखो मम्मी को भी है, पापा को भी है, मुझे भी है. And then I tell them that it's not a medical issue at all. Now, supposing Dr. Mohan, what would happen? Supposing I were an adolescent and I lost all these hair. अब बाल तो है नहीं ज़्यादा. So I'm happy with life, and then I suddenly begin watching TV. TV पे आता है कि you go to such and such a doctor, you go to such and such a Babaji sitting somewhere in the hills of Uttarakhand, and you can get medicine for your hair, right? I watch one TV program, two, three, I ignore. Fourth program, I think, acha, every day this program is coming on TV. Actually, I might be sick, you know. Then my brother comes to meet me, or maybe my cousin, and then he says कि अरे तूने अपने बाल नहीं ठीक कराए, तेरी तो शादी नहीं होगी कभी लाइफ में, you will never get married. तो then again I begin to worry. Finally, end result is I go and get those medicines from that Babaji. So I did not have a medical problem. I did not have a psychological problem also, but society, environment created a social problem in me. And that is what happens with many girls with hirsutism, many boys with a little bit of breast enlargement. So we tell them तुम बिल्कुल सुंदर हो, बिल्कुल healthy हो, तंदुरुस्त हो, and we understand what you are going through. देखो मम्मी पापा अंडरस्टैंड करते हैं तभी तो they have brought you to me. Don't get angry at मम्मी पापा, they are doing their best. मैं भी हूँ, I also understand. But rest assured you are not sick. Rest assured you are very beautiful, very handsome. And now let's address the problem in the best way that we can. इस तरह से आप puberty वाले बच्चों को encourage कर सकते हैं. Dr. Mohan, Shubhlata Chirwal madam कहती हैं there are some children who don't want to go out of the house at all in puberty, and there are others who don't want to enter the house. They are always playing outside. correct. Because of peer pressure. So how do we handle these two different types? तो वो है, आई थिंक मैडम हैज ओनली टोल्ड द आंसर. तो अभी पीयर प्रेशर इज अ पीक प्रॉब्लम. सो जो भी पीयर्स होता है, आई थिंक वी कैन नॉट सेलेक्ट देम फॉर द चिल्ड्रन. सो आई थिंक दोस थिंग्स केप्ट असाइड, that can be told in a different manner. So parents can also tell them, I am also coming with you to whenever you are going. So they may feel a bit supported also sometimes. वो इमोशनली हमको डांट भी सकते हैं, बट nothing harm in telling them I am also coming with you when you are going out, so that I am also happy with you also. So तो एक दूसरा टेक्निक है जो जो पेरेंट्स को, आई थिंक दे ऑलवेज स्क्रूटिनाइज देयर पेरेंट्स मोर. होमवर्क किया कि नहीं, बुक्स जान के देते हैं. Homeworks could be parents, I think they do for their children also sometimes. So I think competition and comparison is so important that nowadays I keep repeating that same line, sir. अभी हमारा टाइम में इतना कंपटीशन नहीं था. अभी कंपटीशन, अभी सभी डॉक्टर बन सकते तो कौन अभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ऐसा बोलते हैं. सो अभी सभी डॉक्टर बनेंगे. हमारा केरला में इतना मेडिकल कॉलेजेस है, इतना ज्यादा पढ़ाते हैं. स्टिल आई थिंक IAS, IPS ऐसा भी जो लोग होना चाहिए हमको. तो आई थिंक ऑल्टरनेटिव करियर्स के बारे में एक अच्छा आइडिया है इन प्यूबर्टी टाइम इटसेल्फ, बिकॉज सम पीपल डोंट वांट टू बिकम अ करियर पर्सन. सम पीपल वांट टू बी एन आर्टिस्टिक, सम आर्टिस्ट करते हैं. तो उसका पियर्स जो भी करता है, मे बी दे ट्राई टू फॉलो देम. तो वो बहुत अच्छा भी है, डेंजरस भी है. सो वी शुड ट्रेंड पता होना चाहिए, उसका करियर कैसा जा रहा है, बल्कि उसको डांटना मत. तो इफ द पर्सन इज स्टडीइंग वेल, but he or she can do well in academics, please promote that person. But if the person has a problem in comprehending so much of syllabus, exams लिखने में अच्छा मार्क नहीं मिलता है, एंट्रेंस भी नहीं क्लियर होता है, उसके में स्पेशल टैलेंट जो भी है, हर बच्चे में हर 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 उम्र में टैलेंट होता है. तो उनका टैलेंट समझ के उनको ग्रूम करने से ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है. क्वेश्चन के ज्यादा हो गया मेरा बोलना, बट आई थिंक वांटेड टू कम्युनिकेट वन इंपॉर्टेंट लाइन दैट कंपैरिजन और कंपटीशन करने से कुछ फायदा नहीं है. Actually, we are harming that child or harming that society, because we want more children in all other professions also.
You're right. When common sense tells us that the root cause of most discord is if you think about the other person's wallet, another adult's wallet, or another person's spouse, then you get in trouble. This is wisdom that is written in Hindi as well as in Malayalam. Similarly, then, why don't we extend that to our children? Why do you begin thinking about other people's children? And the worst thing you can say to child is, why are you not like Mr. Saxena's daughter? Or why are you not like Mrs. Joshi's son? That is one of the worst things you can say to your child. दूसरा, अगर हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, दैट इज पीयर प्रेशर, तो और पीयर्स गलत पीयर्स गलत प्रेशर डाल रहे हैं, either you can fight that pressure, but ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने लगा, तो why don't you create a new source of pressure, a new source of peers, which can be you stand up. If you think that you are not going to be successful, you find a younger uncle or auntie or an elder cousin, elder sibling, and you demonstrate that that person is doing a great job. So you will find that gradually your child will move towards that. If you feel your child is not able to handle peer pressure, you teach your child how to handle. खुद कैसे हैंडल करते हो दफ्तर में प्रॉब्लम्स? How did you handle the last time maybe you did not want to take a drink, you did not want to smoke, but you were being forced to by your colleagues? How did you handle? Sometimes you might have run away, that is flight. Sometimes you might have fought. Sometimes you would have found a basic simple kind of an excuse. ओपीडी में टू एडल्ट्स व्हाट आई टेल इज कि अगर आप जाके बोलोगे ना जी भी ड्रिंक है या टोबैको है या समोसे हैं, डॉक्टर साहब ने मना किया है, देन दे विल फोर्स यू टू टेक डबल. बट इफ यू गो एंड से कि मैंने फलाने पंडित जी का नाम लिया हुआ है, फलाने बाबा जी का नाम लिया हुआ है, मैंने फलानी मस्जिद में मन्नत मांगी हुई है, then usually in India nobody is going to say anything. They may or may not agree with your temple or masjid, but they will respect you and they will say, yeah, you have a right. ठीक है, आपने चर्च में मन्नत मांगी या मस्जिद में मन्नत मांगी या मंदिर में या गुरुद्वारा साहिब में, you go ahead and we will not trouble you. So that works for adults. For children, other things may work. So you have to explore and find out how to get through that peer pressure kind of thing. Dr. Mohan, it's 8 p.m. now and we have this question. And Dr. N.S. Sharda says also, don't be too strict, be liberal with your children. Don't be authoritarian, be authoritative. And don't also abdicate your responsibility. Finally, you have to fulfill your responsibility. And he says, become friendly parenting. That's what he advises. Dr. Mohan, one last question, and this is from a very beautiful lady, and her name is Trishika. She is from Kerala. Her question is, you've been speaking of difficult children. Have you ever thought that no child is difficult? It is the mummy and papa who are difficult. So that is Trishika's question. So what advice would you give to all parents? How to be non-difficult, how to be nice parents? Yeah, parenting is always it's our syllabus में नहीं होता है. So I think we should understand the children's emotional and the person's technique also, whatever the person has been going through. So children are different. They're all God's creations. And हमारा parents are only facilitating their process towards their career or whatever adulthood में होना है, facilitate करना ही है. So I think children are all very important to be groomed properly. Emotional support, जो भी होता है, try to tell them what is the issues are happening with them. And it takes time. I think whatever we tell, I think parenting textbook be padho, wo bhi whatever. So that person I want to just mention that I think because you have asked that question, that itself shows that there is many questions that need to be answered more. So unanswered questions actually hota hai. I think people are always fond of asking questions whenever we go for conferences. जो answerable points है or workable points है वही important है. तो ओवर इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जो उसका पेरेंट्स का फादर इन लॉ या मदर इन लॉ वो भी बहुत ज्यादा इंडल्ज होता है. जो भी सिली इश्यूज में क्वारलिंग करने का, इन्वॉल्व करने का, वो दैट्स ऑल प्लेइंग इन द पर्सन्स चिल्ड्रंस माइंड्स ऑल्सो. So when a child grows into an adult, there may be some components of behavioral temper tantrums or all those things, and those things are taking a lot of time away from your normal life also. I think the message is very clear. I think whatever be the situation, we have to take a professional help, and I think whenever possible, you have to sit with that parents, and then only you can do it. And Trishika also agrees with you. Miss Trishika says that it's a blessing being in a joint family, and she is blessed with great grandparents and great parents, and that
the secret of their family is communication. They communicate with each other and then they move smoothly. And childhood, puberty, adolescent, it just becomes a breeze. Swapna Jain ji Vellore se hain. Madam also thanks you. She has learned a lot of new things today about puberty and health. And Dr. Sharda sir reminds all of us कि बच्चे जो हैं वो भगवान की देन हैं. Children are a gift of God. Do not insult them and take special care of them during puberty. Dr. Sunetra Mondal is a senior endocrinologist from Kolkata. She greets you, Dr. Mohan, and says, thank you. Important messages for parents, parenting. And Shubhlata Chitwal, madam senior hai. Madam says you should start all this in childhood only. तो ये सब थ्योरी बाजी बंद करो मैडम कह रही हैं और अब जाके अपने बच्चे देखो. This message is for all of us. Thank you, madam, for reminding us के 8 बज चुके. And Dr. Mohan, it's been great having you. We have Pratik with us backstage. Pratik, would you please show a certificate of appreciation for Dr. Mohan Tishurai? Thank you. Dr. Mohan, people watching you from across the country, people from health background, people from general public, health advocates like Seema ji from Kolkata and Swapna ji from Vellore. So what message would you like to share with the entire country? Our topic is puberty and health. Yeah. So what I have told in a nutshell, because I think I could not reach on time because I think Onam celebrations were on, and I think reaching on time is one of the things which I always like. So I could not reach on time, but I was fortunate that Kaldra sir took the audience through so many important aspects of pubertal things. From my side, I would just want to add that I think this topic is an important thing because it's like a barren area. This area, the adult medicine के लोग या pediatric के लोग या gynecologist के लोग, psychiatrist के लोग, everybody can play an equal role and responsibility. So it's like nobody's land, but still everybody's possession. So endocrinologist एक बंदा होता है कि a friendly neighborhood person who can definitely solve most of the pubertal problems by careful physical examination. Some counseling also we can also help you, but ultimately we need to do some tests which may definitely clinch the diagnosis. So precocious puberty, early puberty, delayed puberty is always often a very different entity. So all these normal and abnormal puberty have to be taken in the proper sense. Don't feel that we are denying something. So tell them everything and make sure that that person stays with you for a longer time. Then only we can follow them for a future time. Thank you, sir. Thank you. That's a great message. A very simple, a very straightforward, but a very strong message as well for all of us. And we should focus on every phase of life. And we should begin with childhood, begin with puberty. With this, I'd like to thank everybody for having joined us. Dr. Mohan, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, and thank you. KK Med Talks आपकी सेवा में रोज हाजिर होता है 7 to 8 p.m. मैं आपके साथ होता हूँ हर सोमवार और वीरवार. And next Monday, our guest will be Professor Deepti Bhatnagar. Madam is from Punjab and she is an oral physician. She'll be talking to us about oral health, and that's something very important. तो जो भी आपके सवाल हैं oral health से related, prevention और management दोनों, Professor Deepti will be happy to answer them for us. आप सबसे फिर से इजाजत लेते हैं. शब्बा खैर, जय हिंद.